Hello everyone, welcome again to the lecture of Pharmacology by NKT University, Dr. Mangesh Tripathi. Now guys, आज के lecture में will be discussing the next topic of endocrine और वो board पे already लिखा हुआ है, that is uterine stimulants and relaxants. So guys, it is a very short, sweet, important topic in the endocrine as well as in gynecology. This topic also you will come across. ठीक है? Now we'll start guys with uterine stimulants and relaxants. Now what do you mean by the term uterine stimulants first? You should know the definition first, then which drugs comes under this class. ठीक है? Their uses, their mechanism, their indication, contraindication that you should know. ठीक है as a pharmacology subject. Uterine stimulants means they are the drug which stimulate the uterus, correct? So I've just noted down in your notes that they are the drugs which stimulate uterus or the uterine muscles, you can say, is called as the uterine stimulants. उनका एक और नाम दिया गया है ऑक्सीटोसिक्स और एक्बोलिक्स. So any drug which stimulate the uterine muscles is called as the uterine stimulants. Now guys, what is the most important use? क्यों use कर रहे हैं हम लोग ये uterine stimulant? तो using these uterine stimulants because to induce the labor, induction of labor. So we are using this class of drug for induction of labor. मतलब अगर labor induce नहीं हो रहा है normally, so we have to give some drugs. So by drugs when we induce the contraction in the uterus is called as the IOL, that is induction of labor. Also हमें stimulation और कब चाहिए? After the delivery to prevent the hemorrhage. That hemorrhage is called the PPH. So to prevent postpartum hemorrhage. Postpartum मतलब after, partum means delivery. So after the delivery, to prevent the bleeding is called postpartum hemorrhage. ठीक है? So हमारा main दो indications, main दो use जो हमारे uterine stimulants का है guys, that is induction of labor and for PPH. ये हमारा दो main purpose है to use the uterine stimulants. Now guys, कौन से drugs आते हैं uterine stimulants में? So give the heading, the drugs coming under uterine stimulants. Uterine stimulants guys आपको बस याद रखना है mnemonic opium. So opium is the uterine stimulant. The first is the most important, the drug of choice for induction of labor, that is oxytocin. P stands for guys prostaglandins. जब हमने NSAIDs देखा था guys, so prostaglandin का हमने use और देखा था, that is for induction of labor. So prostaglandin, there are different analogs in prostaglandin, PGE1, PGE2, PGF2 analog, वो use होता है अलग-अलग indications में. Now coming to M stands for methyl ergometrine or the ergot alkaloids. They are also used mainly as uterine stimulants. ठीक है? इनके main दो use हैं, they are mainly uterine stimulants. इनमें से कुछ इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए है, कुछ इंडक्शन ऑफ लेबर में नहीं देते हैं, सिर्फ पीपीएच के लिए देते हैं. बट हमारा जो ऑक्सीटोसिन है ना गाइस, वो पीपीएच में भी देते हैं और इंडक्शन ऑफ लेबर में भी. सो हमारे तीन मेन ड्रग्स हैं. ओपीएम आपको निमोनिक याद रखना है, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड मिथाइल एर्गोमेट्रिन. अब हम एक एक करके देखेंगे. सो फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन. ओके, सो ऑक्सीटोसिन गाइस, अगर ऑक्सीटोसिन के बारे में हम बेसिक्स पढ़ें तो आपको याद है इट इज secreted by the hypothalamus, released by the posterior pituitary gland. ठीक है? और इसके अलग-अलग नाम याद है, हमने CET नेट के लिए पढ़ते थे. Say that oxytocin के different names are, we have, it is also called pitocin, it is also called birth hormone, it is also called milk ejecting hormone. ये हमारा बेसिक्स था 12th स्टैंडर्ड में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक. ठीक है? अब अगर हम नेचर देखें ऑक्सीटोसिन, नेचर वाइज इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, so a protein hormone. So we can't give it by oral route, it has to be given by different routes, and most common route it is used is IM, IV. ठीक है?
ये नॉर्मली ऑक्सीटोसिन का रूट होता है, दैट वी शुड नो। ओके, नाउ ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है, हाउ इट इंड्यूस द लेबर, कैसे वो कॉन्ट्रैक्शन करता है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद लेबर इंड्यूस हो जाता है, एज वेल एज वो ऐसा क्या करता है दैट इज द ब्लीडिंग गेट्स कंट्रोल। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यू शुड नो दैट यूट्राइन और uterine receptor we can say in that is oxytocin has the uterine receptor and that is called as, it is acting through GPCR receptor, that is G protein coupled receptor. Now this G protein coupled receptor maybe it releases a secondary messenger called as inositol triphosphate. ठीक है, now this IP3 will release calcium and the calcium will cause muscle contraction, और अगर muscle contraction होगा so there can be induction of labor or bleeding, we can say decreased in PPH। ठीक है, सो हमारे दो मेन इंडिकेशंस हैं किसका, हमारे ऑक्सीटोसिन का, बट कैसे काम करता है दैट यू शुड नो दैट यूट्राइन रिसेप्टर हैज जीपीसीआर, ठीक है, जिसके थ्रू ये काम करेगा ऑक्सीटोसिन। सो थ्रू जीपीसीआर इट एक्टिवेट्स आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट व्हिच विल रिलीज कैल्शियम, एंड कैल्शियम यू नो इज अ मसल कॉन्ट्रैक्टर, सो इट विल contract the uterine muscle, the myometrium, and thereby there is induction of labor as well as delivery होने के बाद bleeding के भी chances कम हो जाते हैं, that is to prevent the bleeding in PPH। ठीक है, ये इसका mechanism of action है। अब अगर हम pharmacokinetic property देखें, let's just remember it is metabolized, your oxytocin is metabolized in liver and kidney by an enzyme called oxytocinase, ये आपको पता होना चाहिए, for MCQ we can have। Now T half अगर हम देखें, it is only 15 to 20 minutes and onset of action of oxytocin is 2 to 3 minutes, very fast। ठीक है, that you should know for MCQ। So T half 15 से 20 मिनट and onset of action is 2 to 3 minutes। Pharmacokinetics property, it is metabolized mainly in the liver and kidney by oxytocinase। ठीक है, इतना सबको समझ गया बेसिक्स। Now guys, what is the dose of oxytocin for induction of labor as well as for PPH, that you should know because ये MCQ में आने के chances होते हैं। Dose की अगर हम बात करें of oxytocin for PPH and induction of labor, it is, अगर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए हम देखें सो डोज याद रखो, 5 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज मिक्स्ड इन 500 ml ऑफ saline NS which equals to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन, एंड अगर ड्रॉप्स में इसको कैलकुलेट किया जाएगा गाइस, इट इज 0.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ड्रॉप। ठीक है, सो मैक्सिमम ड्रॉप हम जो देंगे वो होगा 52 ड्रॉप्स पर मिनट, दैट इज 26 मिली यूनिट पर मिनट। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कितने ड्रॉप्स पर मिनट जाने चाहिए, दैट इज 52 ड्रॉप्स पर मिनट इन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो, इट इज इजी, 5 यूनिट मिक्स्ड इन 500 ml ऑफ saline which equals to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट, और ड्रॉप्स की बात करें तो इट इज मैक्सिमम 52 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, और अगर पीपीएच दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज की बात करें, सो द dose it is 20 to 40 milli international unit IM और IV। So ये PPH का डोज है और ये इंडक्शन ऑफ लेबर का डोज है। अब now guys just remember that oxytocin is drug of choice for induction as well as augmentation of labor। Now what is augmentation? स्पीड बढ़ा देगा, मतलब जो डिलीवरी का स्पीड है वो बढ़ा देगा, इज कॉल्ड फैसिलिटेट कर देगा। जो डिलीवरी की स्पीड पहले स्लो थी बट ऑक्सीटोसिन देने के बाद इट विल इंक्रीज, सो दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन। सो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। आल्सो इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच। प्लीज रिमेंबर ये दोनों कंडीशन के लिए हमारा ऑक्सीटोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने क्या क्या देख लिया, इट इज हु सीक्रेट्स इट, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्सीटोसिन, pharmacokinetic property, mechanism of action, indications and their dose for these two indications. Now coming to the most important, that is adverse effects as well as the contraindication. Guys, अगर हम adverse effect of oxytocin की बात करें
सो जस्ट कॉमन सेंस लगाओ, अगर हमने ज्यादा डोज दे दिया ऑफ ऑक्सीटोसिन, सो व्हाट विल हैपन टू द बेबी? क्या हो सकता है बेबी में? इट कैन हैव अरिथमियास, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने से, और क्या हो सकता है? फीटल हाइपोक्सिया, fetal death, maternal death, uterus में इतना contraction, it can cause uterine rupture. You understood? So it is basics. So पहला अगर हम देखेंगे, आप पहला ये लिख सकते हो, it can cause uterine rupture, डोज बढ़ गया, fetal hypoxia, fetal and maternal death, और fetal arrhythmias, fetal and maternal death, it can cause hypotension. ठीक है, so these are the adverse effect of oxytocin, guys. Indication के बारे में बात करें, so the first is breech presentation, second is cephalopelvic disproportion, जो बेबी का हेड इज बिगर, और फीमेल इज शॉर्ट स्टेचर फीमेल, ठीक है, उनका पेल्विक कैविटी स्पेस इज स्मॉल, सो वहां से we can't reduce the labor by oxytocin. Cephalopelvic disproportion, this is called CPD. Third is placenta previa, and fourth is fetal distress. बच्चा ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, so we can't afford. ठीक है, so these are the adverse effects, guys, and contraindications of oxytocin. Now, guys, there is one more longer acting form of oxytocin, and that is called carbitocin. So, carbitocin is a longer acting form, synthetic form of oxytocin, which is also given by IM and IV for induction of labor as well as PPH. ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है कार्बिटोसिन का, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट यूट्राइन स्टिमुलेंट ओपीएम में, ओ हो गया, अब हमारे पे पी का, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स. कमिंग टू गाइस सेकंड यूट्राइन स्टिमुलेंट, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोस्टाग्लैंडिन. यू नो प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्टर आल्सो, सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दैट इज पीजी. अगर हम पीजी में आते हैं, सो वी हैव सम, दैट इज फर्स्ट इज द कार्बोप्रोस्ट. It is a PGF2 alpha analog. We have misoprostol, not mifepristone, ठीक है, misoprostol. This is PGE1 analog, and we also have PGE2 analog, that is called as the dinoprostol. This is PGE2 analog. Okay, guys. So we have carboprost, which is also called as sometimes dinoprost. It is dinoprostone. Okay, so carboprost we have, guys. We have misoprost, and we also have dinoprostone, that is PGE2 analog. ठीक है? So हम लोग एक एक करके देखेंगे. The first is carboprost. So carboprost is PGF2 analog. Just remember that it is a drug of choice for PPH in oxytocin resistant cases. जहाँ पे we can't give oxytocin for PPH, always give carboprost. So oxytocin resistant cases के लिए it is a drug of choice. ठीक है? It is absolutely contraindicated for induction of labor, because it can cause fetal hypoxia. So it is never given for induction of labor. याद रखना है, carboprost is mainly given for PPH. उसमें वो भी कब देंगे? When there is oxytocin resistant cases. ठीक है? It is also contraindicated in asthma patient as well as pulmonary hypertension patients. ठीक है, and the dose of carboprost is 250 microgram and maximum 7 to 8 doses we can give, not more than that. ठीक है,
and side effect of carboprost is mainly diarrhea. ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने से कैन कॉज मोर ऑफ डायरिया. ठीक है, सो याद रखना हमारा कार्बोप्रोस्ट इज PGF2 एनालॉग. ठीक है, it is a second uterine contractor or stimulants. It is a drug of choice for PPH in oxytocin resistant cases. It is contraindicated in IUL because it can cause fetal hypoxia, as well it is also not given in asthma and pulmonary hypertension. ठीक है, it is the dose is 250 microgram, maximum 7 to 8 doses. ठीक है, and all are mainly given by IM/IV route. ठीक है, एंड साइड इफेक्ट ऑफ दिस इज डायरिया. ठीक है, इतना आपको काफी है जानने के लिए. ओके, नाउ मूविंग टू द मिसोप्रोस्टॉल एंड डाइनोप्रोस्टॉल. ठीक है, so misoprostol, that is PGE1 analog, guys, just remember it is the only uterine stimulants. It is the only uterine stimulant which is given in tablet form. और WHO क्या बोलता है? ठीक है, देखो रूरल एरिया में क्या होता है, डिलीवरी तो ठीक है, बट आफ्टर दैट पीपीएच का इंसिडेंस बहुत कॉमन हो जाता है बहुत बार बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स. ठीक है, सो वहां पे हॉस्पिटल ले जाते जाते इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है दैट फीमेल का डेथ होने के चांसेस रहते हैं. सो WHO has recommended that मतलब the tablets of misoprostol, that is an analog of 800 microgram should be distributed. ठीक है, tablet sublingual oral should be distributed to the rural areas. ठीक है, why? To prevent PPH. ठीक है, पहले ही बता दिया था कि डिलीवरी के टाइम आपको फीमेल को कंज्यूम करना है to prevent the PPH. ठीक है, that is 800 microgram tablet. So now misoprostol is also used for induction of labor. Now the dose is 25 microgram vaginally or orally. ठीक है, so vaginally orally maximum आप 6 डोज देना है. ठीक है, maximum 6 डोज 4 hour इंटरवल में. ठीक है, आपको मैक्सिमम 6 डोज देना है 4 hour इंटरवल में. बट इफ देयर इज नो प्रोग्रेस, मतलब लेबर चालू नहीं हुआ है, देन गिव ऑक्सीटोसिन. ये भी एक तरीका है. ठीक है, वी कैन स्टार्ट विद मिसोप्रोस्टॉल, दैट इज PGE1 एनालॉग 25 माइक्रोग्राम आइदर वेजाइनली. ठीक है, और ओरली मैक्सिमम 6 डोज 4 hour इंटरवल के बीच में. इफ देयर इज नो प्रोग्रेस वी हैव टू गिव ऑक्सीटोसिन. ठीक है, ये हमारा हो गया मिसोप्रोस्टॉल. ठीक है, अब इसका एडवर्स इफेक्ट हम देखेंगे. सो इट कैन कॉज हाइपरथर्मिया, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन से हीट जनरेट होता है, हाइपरथर्मिया, शिवरिंग कैन अकर. ठीक है, nausea and vomiting. ठीक है, contraindication, not contraindicated in scarred uterus. ऑलरेडी भाई स्कार है यूट्रस में, सेकेंड डिलीवरी है. ठीक है, अगर ये हम देंगे इट कैन कॉज यूट्राइन रप्चर. ठीक है, सो इट इज द मोस्ट कॉमन ड्रग वी कैन से टू कॉज यूट्राइन रप्चर. तो याद रखना, मोस्ट कॉमन ड्रग टू कॉज यूट्राइन रप्चर इज मिसोप्रोस्टॉल, दैट इज PGE1 एनालॉग. ठीक है गाइस, तो याद रखना which is the only prostaglandin available in tablet form, that is only misoprostol. ठीक है, we can say it is the only uterine stimulant which is available in tablet form. PPH के लिए WHO ने बोला 800 माइक्रोग्राम देना है, और हमारे IOL ग्रेड 25 माइक्रोग्राम वैजाइनली या ओरली 3 से 4 मतलब मैक्सिमम 6 डोज देना है 4 hour इंटरवल में. इफ देयर इज नो प्रोग्रेस देन ऑक्सीटोसिन. एडवर्स इफेक्ट में हाइपरथर्मिया, शिवरिंग, नोशिया, वॉमिटिंग, एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन स्कार्ड यूट्रस बिकॉज़ देयर इज अ चांसेस फॉर यूट्राइन रप्चर, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन ड्रग टू कॉज यूट्राइन रप्चर. ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन पे, दैट इज डाइनोप्रोस्टॉन, दैट इज PGE2 एनालॉग. Okay, now guys, it is available in 2 form. ठीक है, there is
Cerviprime gel, and there is Cervidil. ठीक है? ओके, Cerviprime gel का डोज गाइस याद रखना, इट इज 0.5 मिलीग्राम एंड इसका डोज इट इज 10 मिलीग्राम. इट इज इंसर्टेड इन cervix, maximum 3 doses, and after 6 hours, once the cervix are, we can say, softens, ठीक है, there is cervical dilatation, then we have to give oxytocin. ठीक है, understood? Okay, Cerviprime gel, and thereby we have induction of labor which will start. ठीक है, and Cervidil 10 milligram, it is inserted in posterior fornix of vagina, the space, ठीक है, of vagina, 12 hours, for 12 hours, and उसके बाद there will be induction of labor. ठीक है, it will be initiated, मतलब 12 hours रखने के बाद मतलब labor will start. ठीक, तो Cervidil we have, and we have Cerviprime gel who are PGE2 analogs. इतना आपको ध्यान में रखना है दोनों. ठीक है? Okay. Now guys, Cervidil is not a gel. ठीक है, it is a, we can say, an instrument which is kept in the posterior fornix, which will release the drug that is prostaglandin E2 analog, that is dinoproston. ठीक है, और maximum हम लोग जो डोज दे रहे हैं it is 10 मिलीग्राम, जो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं posterior fornix पे for 12 hours. ठीक है, before the induction of labor starts. ठीक है, और ये हमारा जेल है. Understood? Okay. Moving to the third uterine stimulant which is pending is methyl ergometrine. Now you know guys, it is a ergot alkaloid. तो अगर साइड इफेक्ट देखना चाहें, जो कैन कॉज सीवियर हाइपरटेंशन. ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, इट कैन कॉज हाइपरटेंशन. So again, not given for induction of labor because severe अगर contraction होगा तो vasoconstriction होगा, fetal circulation decrease हो जाएगा, fetal hypoxia हो जाएगा. So it is mainly given for PPH, and the dose is 0.2 milligram IM repeated every 2 to 4 minutes. ठीक है, मिथाइल एर्गोमेट्रिन, इसका दूसरा नाम है, ब्रांड नेम इट इज मिथर्जी. ठीक है, एर्गोमेट्रिन, मिथाइल एर्गोमेट्रिन, मिथर्जी. ठीक है, सो इट इज मेनली गिवन थ्रू IM रूट. एल्कलॉइड है, एर्गोट एल्कलॉइड है. इट इज contraindicated, absolutely contraindicated in induction of labor because it can cause vasoconstriction, जिसके वजह से क्या होगा, blood flow can decrease, and अगर blood flow बच्चे में कम हो गया, it can cause fetal hypoxia. So never given for induction of labor, mainly given for PPH. ठीक है? Okay. Now adverse effect अगर हम देखें, it can cause hypertension. So not given in all coronary artery disease patient, hypertensive patients. ठीक है? Because it can cause hypertension. ठीक है? Understood this much? Okay. So this is the last drug in uterine stimulant. Now coming to हमारा जो last छोटा सा टॉपिक बचा है, that is uterine relaxants. Okay, so we are coming to the last small topic, that is uterine relaxant. Okay. So guys, कब देते हैं, आपको क्या लगता है? ठीक है, हमें यूट्राइन स्टिमुलेंट कब देना है? PPH इंडक्शन ऑफ लेबर में. सिमिलरली यूट्राइन रिलैक्सेंट कब देना है? जब हमें लेबर भाई टालना है और आगे टालना. भाई लेबर को क्यों टालना है? बिकॉज अगर लेबर चालू हो गया बिफोर 32 वीक्स 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो बेबी का लंग मैच्योर नहीं है. अब बेबी का लंग कैसे मैच्योर होता है? आपको याद है, हमने लास्ट लेक्चर ही देखा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसमें उसका एक यूज देखा था, लंग मैच्योरेशन. सो इन प्री टर्म लेबर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लंग मैच्योरेशन इज योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दैट इज डेक्सान बीटामिथासोन. आपको याद होगा. सो बीटामिथासोन डेक्सामिथासोन का एक्शन चालू होने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, और तब तक उसका एक्शन पूरा हो जाएगा, तब तक लंग मैच्योर हो जाएगा. तो बस 2 दिन के लिए, वी कैन से 48 आवर्स डिलीवरी को टालना है.
हमें ना, ताकि भाई लंग मैच्योर अगर नहीं हुआ रहेगा, बेबी विल डाई बाहर निकल के, ठीक है, बाहर निकलेगा एंड बेबी विल डाई. सो वी हैव टू हैव मैच्योर लंग ऑफ द बेबी बिफोर इट कम्स टू द वर्ल्ड. सो वी हैव टू गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसको काम करने में 48 आवर्स लगता है. सो तब तक ये जो यूट्राइन रिलैक्सेंट है जिसका दूसरा नाम है टोकोलाइटिक्स, इनका इतना ही रोल है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक्शन हो जाए, बेबी का लंग मैच्योर हो जाए, बस. और कोई काम नहीं है यूट्राइन रिलैक्सेंट्स का. प्लीज रिमेंबर, सिर्फ कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एक्शन होने तक ही उनका काम है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका एक ही रोल है, जस्ट वेटिंग पीरियड, कि भाई 2 दिन तक हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया, उसका एक्शन हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब लेबर हो जाए. ठीक, ओके. नाउ व्हिच आर द यूट्राइन रिलैक्सेंट्स which will prevent the preterm labor or which will relax the uterus? Just remember by A, B, C. A stands for atoxibin, B for β₂-agonist, and C is calcium channel blocker. So A, B, C, these are the 3 tocolytics mainly. ठीक है, we have other miscellaneous also. So atoxibin gas क्या है? Atoxibin is nothing but it is a oxytocin receptor antagonist. You know oxytocin कैसे काम करता है? Through IP3 GPCR, GPCR के through IP3 को बढ़ाता है, वो कैल्शियम को बढ़ाता है, मसल रिलैक्स करता है. ये उल्टा करेगा. So your atoxibin will inhibit the release of IP3 जो कैल्शियम को कम कर देगा, जिसकी वजह से यूट्राइन रिलैक्स हो जाएगा. सो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. तो इसका मैकेनिज्म अगर कोई पूछे तो यू शुड नो दिस मैकेनिज्म जो भी मैंने बता दिया. ठीक है, नाउ एटोसिबेन इट इज वेरी, अगर मुझे भाई कोई पेशेंट कार्डियक पेशेंट है उसमें मैं टोकोलाइटिक देना है प्रेग्नेंट फीमेल, सो इट इज अ कार्डियक सेफ, इट इज अ कार्डियक सेफ टोकोलाइटिक. ठीक है, इट इज अ टोकोलाइटिक ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक पेशेंट. Now β₂-agonist हमने अस्थमा में पढ़ा था. Now अगर उसको याद करना है just remember by T sir. ठीक है, T sir. Now T sir मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. T stands for terbutalin, S salbutamol, I for isox supreme, R for ritotrine. ठीक है, सो टी सर इज योर β₂-agonist. अब यू नो β₂-agonist का एक्शन क्या है, यू नो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, थ्रू एडिनिलाइल इट इंक्रीजेस द एंजाइम कॉल्ड एज एडिनिलिल साइक्लेज एंजाइम व्हिच विल इंक्रीज साइक्लिक AMP which will cause smooth muscle relaxation. You know bronchodilation कैसे कर रहा था. इसे the most preferred β₂-agonist जो guys है it is terbutalin. So याद रखना terbutalin is most preferred one. ठीक है, longer acting है, so it is most preferred β₂-agonist. ठीक है, as tocolytics. Now coming to the last one, that is C, calcium channel blocker. So we have 2 drugs, diltiazem and nifedipine. So ये हमारे 2 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं एज टोकोलाइटिक्स. तो आपको इतने नाम याद हैं. ठीक है, सो ABC, A for atoxibin which is oxytocin receptor antagonist, β₂-agonist में T sir है, we have terbutalin, salbutamol, isox supreme and ritotrine. C is calcium channel blocker, that is diltiazem and nifedipine. With mechanism you already know. ठीक है, this is all about the uterine relaxant. Now we have some miscellaneous uterine relaxants. ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दो miscellaneous tocolytics. Okay, so we have miscellaneous tocolytics. So we have 2 NSAIDs. Yes, NSAIDs are also acting as. उसमें we have mainly 3 indomethacin, Sulindac, Zinzent and aspirin.
And now one more we have magnesium sulfate. Now by magnesium sulfate, it is mainly neuroprotective. It is a neuroprotective tocolytic. बच्चे के ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. So this you should know. It is also used in eclampsia conversion के टाइम यूज करते हैं magnesium sulfate as well as tocolytics, ठीक है. It is neuroprotective main role, ठीक है. अब NSAIDs में most preferred is indomethacin, most preferred tocolytic. There is a society called as American College of Obstetrics and Gynecology. वो क्या बोलती है, अगर less than 32 weeks में लेबर चालू हो गया है, less than 32 weeks में, और हमें टोकोलाइटिक्स देना है, so it is tocolytic of choice. You should know tocolytic of choice is indomethacin. या आप NSAID में पढ़े हो, उसका मैकेनिज्म all that you can remember. And अगर between 30 to 34 weeks लेबर चालू हुआ है, then tocolytic of choice is NEETPG, that is calcium channel blocker. ठीक है guys, so please remember that American College of Obstetrics and Gynecology, they have said that less than 32 weeks में अगर लेबर चालू हो रहा है, so tocolytic of choice is indomethacin, but between 30 to 34 weeks हो रहा है, so it is your NEETPG, ठीक है. So this is all about guys uterine stimulants as well as the uterine relaxant, which are also called as the tocolytic. तो छोटा सा टॉपिक है, short sweet टॉपिक है, तो short note MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Guys, we'll meet in the next lecture with the next topic of endocrine. तब तक आप प्लीज पढ़ते रहिए और ऐसे ही प्रसन्न रहिए. Thank you so much. Bye bye.